Hello students, I hope you all are safe and healthy. So today is the last part of chapter number 2, that is part 5. Today we're going to complete this chapter. So as I mentioned in part 4 that there are 8 separation techniques. So we have done 4 separation techniques in part 4 video and today we're going to study next 4 separation techniques. Okay? And physical change and chemical change also. So the first separation technique is how to separate a single color from black ink. So here you can see one activity. Before we read this activity, please look at this diagram which shows separation of dyes in black ink using chromatography. Let us come back to the activity so that we can read the steps. First is take a thin strip of filter paper. Second, draw a line on it using a pencil approximately 3 centimeters above the lower edge. Then put a small drop of ink with help of a pen at center of line and let it dry. Lower the filter paper into the glass jar containing water in such a way that the ink drop remains just above the water level. Leave it undisturbed. So this is how you have to arrange. ठीक है, ग्लास जार में आपको ये दिख रहा है फिल्टर पेपर, आपको इसी तरह से अरेंज करना है और वो फिल्टर पेपर पूरा नीचे तक टच नहीं होना चाहिए. एंड देन ड्रॉ अ लाइन ऑन इट यूजिंग अ पेंसिल. नीचे से 3 सेंटीमीटर अबव आप एक लाइन ड्रॉ करिए पेंसिल से और उस लाइन पर एकदम सेंटर में आपको एक डॉट बनानी है either by a sketch pen or a fountain pen and let it dry. ठीक है, एक सेंटर में आपको एक डॉट बना के उसको सूखने दो. फिर उसके बाद lower the filter paper into the jar so that the drop of ink on the paper is just above the water level. वो जो drop of ink आपने बनाई है लाइन पर वो water level से just थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. Is that clear? और फिर उसको आप कुछ टाइम के लिए ऐसे ही एक जगह पे रख दो. लीव इट अनडिस्टर्ब्ड. ओके, एंड देन वॉच इट केयरफुली. जैसे जैसे वाटर ऊपर राइज करेगा फिल्टर पेपर क्योंकि वाटर में इमर्स्ड है. ठीक है, वाटर पेपर नीचे पानी में है तो जैसे जैसे पानी ऊपर फिल्टर पेपर में ऊपर राइज करेगा तो आप को ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करनी है. सो बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या होगा? इंक यू नो वेरी वेल इट हैज वाटर एज अ सॉल्वेंट और इंक के अंदर डाई प्रेजेंट होता है विच इज soluble in it. As the water rises on the filter paper, it takes along with it the dye particles. जैसे जैसे पानी ऊपर राइज करेगा फिल्टर पेपर पे वैसे वैसे वो अपने साथ डाई के पार्टिकल्स भी जो हैं वो अपने साथ ऊपर राइज करवाएगा. ठीक है, यूजुअली अ डाई इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more colors. The colored component which is more soluble in water rises faster and in this way the colors get separated. Okay, so what is chromatography? It is the process of separation of components of a mixture is known as chromatography. Chroma in Greek means color. So chromatography is the technique used for separation of those solutes that dissolve in the same solvent. Now let's discuss its application. First is it is used to separate colors in a dye. Second, to separate pigments from natural colors. And third, to separate drugs from blood. So these are the applications of chromatography. You have to learn all these applications, okay? Now the second question, how can we separate a mixture of two miscible liquids? Miscible liquids are the ones that mix together in all qualities and form a single layer, that is water and alcohol. This is the example. ठीक है, miscible liquids वो होते हैं जो आपस में mix हो जाते हैं easily. The method used to separate two miscible liquid is distillation. Distillation you have already heard before. क्या होता है distillation?
It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. ठीक है, तो distillation basically क्या है? Two miscible liquids को separate करने के लिए एक process है जो use करते हैं. I'll show you its diagram also. So let us see how distillation is used to separate two miscible liquids. So this is the method of distillation. Okay, before we proceed, let me show you its diagram. So this is the diagram of distillation. Here you can see the distillation flask which is fitted with thermometer, and then water condenser is also joined, and the other end of water condenser is pouring out acetone in a beaker. So in this diagram, we are separating out water and acetone. Now let us read the activity. Take the mixture of acetone and water in a distillation flask fitted with a thermometer. Arrange the apparatus. Apparatus का मतलब जो भी distillation flask है, condenser है, beaker है, ये सब apparatus होते हैं जो एक experiment में use होते हैं. Heat the mixture slowly, keeping a close watch at the thermometer. The acetone vaporizes, मतलब वो वेपर की फॉर्म में चेंज हो जाता है, और फिर जब वेपर्स ऊपर अराइज करते हैं तो वो ठंडे होके कंडेंस हो जाते हैं और वो कंडेंसर में चले जाते हैं. ठीक है, कहाँ कंडेंस होते हैं? कंडेंसर में. ठंडे होकर के कंडेंस हो जाते हैं एंड कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट, एंड हेंस वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क. So this is how two miscible liquids can be separated by the process of distillation. Another thing is, a mixture of two miscible liquids can also be separated by the process of fractional distillation. A fractional distillation क्या होता है? This is also a process of distillation only, but इसमें fractionating column को use करते हैं. और fractional distillation हम उसी condition में use करते हैं in which the difference in the boiling points of two miscible liquids is less than 25 K. K means Kelvin. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस हम यूज करते हैं टू मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट करने के लिए जब उनका बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से भी कम होता है. सपोज देयर आर टू लिक्विड्स ए एंड बी, टू मिसिबल लिक्विड्स हैं. ए का बॉइलिंग पॉइंट 500 केल्विन है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 523 केल्विन है. तो जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स को माइनस करेंगे, 523 माइनस 500 इज 23. सो इस कंडीशन में इन लोगों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 25 केल्विन से भी कम है. ठीक है, जो डिफरेंस है सॉरी वो 25 केल्विन से भी कम है. तो इस केस में वी विल यूज द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. So there is a slight difference in the diagram of fractional distillation. इसमें fractionating column add होता है. ठीक है, a simple fractionating column is a tube packed with glass beads. The beads provide surface for the vapors to cool and condense repeatedly. So this is the function of fractionating column which is used in fractional distillation. So this is the diagram of fractional distillation. Here the setup is, you can see distillation flask on which a fractionating column is present which is fitted with a thermometer, and then again sidewise you can see water condenser is present, and the other end of water condenser a conical flask is present which collects pure liquid. So this was all about the separation technique used to separate a mixture of two miscible liquids. Now the next is question number 3. How can we obtain different gases from air? We know that air is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture हमने already पढ़ा था जिसमें सारे components uniformly mixed होते हैं. So it can be separated into its components by fractional distillation. Okay, so here also this process is used. So here you can see this flow chart in which what is happening here,
The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता है वैसे ही कूलिंग होती है। और जब कूलिंग होगी, जब डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, क्यों करेंगे? टू गेट लिक्विड एयर। ठीक है, दिस लिक्विड एयर इज अलाउड to warm up slowly in a fractional distillation column. Then, where gases get separated at different heights depending upon their boiling points. So, here you can see the table also in which three gases are mentioned along with their boiling points. Okay. So, this is the setup which is used to separate oxygen gas from air. सेम सेटअप है, सेम मेथड है। एयर को कंप्रेस करते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड देन उसको कूल करते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, और फिर उसके बाद जो लिक्विड एयर होती है वो स्लोली इट गोज इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, और फिर वहां से डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट ये गैसेस सेपरेट आउट हो जाती हैं। So this is how we can obtain different gases from air. Now the last separation technique is how can we obtain pure copper sulfate from an impure sample. Copper sulfate can be obtained from an impure sample by the process of crystallization. Okay, so what is a crystallization process? It is a process which is used to purify solids in the form of crystal. ओके, सॉल्यूशन से जब हम इम्प्योर सैंपल में से प्योर सॉलिड्स को निकालते हैं, अलग करते हैं, तो वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में ऑब्टेन होते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। Now let us read this activity. How we have to proceed in this process of crystallization. Let us read. Take some impure sample of copper sulfate solution in a china dish. Dissolve it in minimum amount of water. बहुत कम amount of water हमें लेना है. Filter the impurities out using filter paper and then evaporate water from copper sulfate solution so as to get a saturated solution. ठीक है, तो क्या करना है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसके बाद उसको फिल्टर करना है। तो जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज होंगी वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगी, और जो इम्प्योरिटीज बहुत छोटी होंगी वो फिल्टर पेपर से भी निकल के solution में आ जाएंगी। एंड देन वी हैव टू इवेपोरेट इट so as to get a saturated solution, and then cover the solution with the filter paper and leave it undisturbed to cool slowly. ठीक है, उसके बाद फिर आप उस सॉल्यूशन को चाइना डिश में जो प्रेजेंट है उसको आप कवर कर दो एक फिल्टर पेपर से, और एक ऐसी जगह रख दो जहां पर उसको कोई डिस्टर्ब ना करे और वो एकदम धीमे धीमे ठंडा होता रहे। एंड देन यू विल गेट, जब वो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, यू विल गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ क्रिस्टल फॉर्म में कॉपर सल्फेट ऑब्टेन होते हैं। सो दिस process is known as crystallization. Now let us revise what is crystallization. It is a process that separates a pure solid in the form of its crystals from a solution. So crystallization technique is considered better than simple evaporation technique. Why? Because of few reasons. Number one, some solids decompose, or some like sugar may get charred on हीटिंग टू ड्राइनेस। है ना, शुगर को जब हम किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो वो एकदम जल जाती है, ब्राउन ब्राउन हो जाती है। सो दिस इज नोन एज चारिंग ऑफ शुगर। सेकेंडली, some impurities may remain dissolved in the solution even after filtration. फिल्ट्रेशन के बाद भी कुछ impurities जब फिल्टर नहीं होती है, बहुत छोटी होती हैं, फिल्टर पेपर से क्रॉस हो जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं। लेकिन इवेपोरेट के बाद भी जो हमें सॉलिड मिलता है उसमें भी वो impurities प्रेजेंट होती हैं। सो दैट शोज कि क्रिस्टलाइजेशन जो है उससे हमें प्योर सॉलिड ऑब्टेन होता है, बल्कि और इवेपोरेशन से हमें प्योर सॉलिड ऑब्टेन नहीं होता है बल्कि कंटामिनेटेड फॉर्म में होता है। Now let's see what are the applications of crystallization. First is purification of salt that we get from seawater.
क्योंकि जो सॉल्ट सी वाटर से हमें मिलता है वो इम्प्योर्ड फॉर्म में होता है। इम्प्योर फॉर्म से उसे हम प्योर फॉर्म में लाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को यूज करते हैं। एंड सेकेंडली, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। एलम क्या होता है, हिंदी में इसको फिटकरी बोलते हैं। ठीक है, तो फिटकरी भी आपने देखी होगी, क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। So these are the applications of crystallization. And with this, we have completed all the 8 separation techniques. Okay, I hope you have understood also. So with the advancement in technology, many more methods of separation techniques have been devised. In cities, drinking water is supplied from the waterworks. Waterworks एक जगह होती है जहाँ पे रिजर्वॉयर में जो वाटर प्रेजेंट होता है, रिवर से वाटर ला करके फिर वहाँ पे पूरा प्योरीफाई करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं बीच में, और फिर वो प्योरीफाइड वाटर हमारे घरों तक आता है। लेट मी शो यू इट्स डायग्राम। So this is the diagram of water purification system in waterworks. At the extreme left you can see reservoir is present. reservoir से जब water आता है तो वो sedimentation tank में जाता है, जहाँ पर जो भी solid present होता है water में वो नीचे settle down हो जाता है। ठीक है, and then it is passed to the loading tank टू सेडिमेंट द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। अभी भी उनमें जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है वाटर में वो यहाँ पर सेटल डाउन हो जाती है। एंड देन दैट वाटर गोज टू द फिल्ट्रेशन टैंक, जिसमें फाइन सैंड, ग्रेवल, कोर्स ग्रेवल प्रेजेंट होता है। वहां पर वाटर फिल्टर होता है और फिर जाता है क्लोरिनेशन चैम्बर में, जहां पर क्लोरीन, इट किल्स द बैक्टीरिया, वहां पर बैक्टीरिया किल होते हैं। एंड देन दिस वाटर रीचेज आवर होम। All right, so this is how water gets purified in waterworks. Now, the last topic of the chapter is physical and chemical changes. This is not a new topic for you, so let us do this. Let us revise it. Physical change. फिजिकल चेंज बेसिकली क्या होता है, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, कलर, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती हैं, वो एज इट इज रहती हैं। ठीक है, लेट अस रीड द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड। जो प्रॉपर्टीज हम देख पाते हैं लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, fluidity, density, melting point, boiling point, etc. are the physical properties. The interconversion of states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance. All right, let us see few examples. Ice, water, and water vapor all look different. Ice solid होता है, water liquid, and water vapor gaseous form में present होता है। Okay, and these all look different and display different physical properties, but they are chemically same. तीनों का chemical composition क्या है, H2O, तीनों same है। Okay, next is chemical change. Chemical change brings change in the chemical properties of matter and we get new substances. A chemical change is also called a chemical reaction. For example, burning is a chemical change. We can see one more example of water and cooking oil. You know very well both are liquid, but their chemical characteristics are different. How they are different? They differ in odor, means smell, okay, and inflammability. We know that oil burns in air whereas water extinguishes fire. So it is this chemical property of oil that makes it different from water. So this is all about physical and chemical change. So students, today we have completed the chapter. So please learn all the points which we have discussed in all the 5 videos. Okay, and complete your notes also. Whatever I have written in this video, please write down each and every point in your fair notebook. Okay students, so all the best and thank you.